Yes, let's discuss universal law of gravitation, or you can say that Newton's law of gravitation. This law is introduced by Newton, Sir Isaac Newton. Every object in the universe attracts every other object with a force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. And the force is along the line joining the center of two objects. This is the statement of universal law of gravitation. What it states is इन हर ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है एक फोर्स के साथ और वो फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस मींस जो भी दो ऑब्जेक्ट हैं उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है एंड इन बराबर नहीं सॉरी प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करो और इनवर्सली प्रोपोर्शनल मींस अगर आप डिस्टेंस इंक्रीज करते जाओगे तो आपका फोर्स डिक्रीज होता जाएगा लेकिन अगर आप डिस्टेंस डिक्रीज करोगे तो फोर्स इंक्रीज होगा but the main thing is that the distance is from the center of the two objects दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर से लेना आपको डिस्टेंस ये नहीं है कि उनके सरफेस से लोगे आप ठीक है दैट्स व्हाई ग्रेविटेशनल फोर्स इज आल्सो नोन एज सेंट्रल फोर्स बिकॉज इट एक्ट्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स जॉइनिंग देयर सेंटर्स उनके सेंटर्स को अगर आप ज्वाइन करोगे जो भी आपका डिस्टेंस बनेगा ना उसी के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था indirectly means if you increase the masses of the two objects then the force will increase if you decrease inversely proportional if you decrease the distance then the force will increase and if you increase the distance force will decrease ऐसे होता है ठीक है इनवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब एंड इट्स स्टेटमेंट reveals that every object in the universe attracts every another object with a force and that force is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of the distance between them तो क्या हो गया देखो A and B let us consider two objects A and B of masses m and small m lie at a distance d from each other as shown in figure 10.2. We have considered two objects A and B, A having mass capital M and B having mass small m. And the distance between both the object is d from each other as shown in figure because the distance is shown from the centers of the two objects, line joining the center of the two objects. According to the universal law of gravitation, the force between two objects is directly proportional to the product of their masses. That is, F is, this is the sign of proportionality. ये जो आपका sign है, this is the sign of proportionality and product means multiply. You have to multiply all the masses, both the masses, m into m, and the force between two objects is inversely proportional to the square of the distance between them. The distance between both the objects is d और square कर दिया तो d square. F is directly proportional to 1 by d square. Combining these two equations, you will get the result F is directly proportional to m into m upon d square. जब आप इन दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या बन गया F is proportional to m upon d square when you combine equation 10.1 and 10.2. And I have told you in the previous chapter that if we remove the sign of proportionality, we will introduce a constant. And here that constant is G.
क्या है यहाँ पे वो कांस्टेंट जी, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक इज जी जो है, जी इज कॉल्ड द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस कैपिटल जी को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, because it is introduced after removing the sign of proportionality into equals, then we have to introduce a constant, और it's because it's a constant, that's why it's इसकी वैल्यू क्या होती है? हमेशा फिक्स रहती है, that is 6.67 into 10 raised to power minus 11